we will talk about offer, and we will talk about acceptance, and then we'll talk about the revocation of an offer and acceptance. ये end पे आ जाएगा. Now, in legal terms, how do we understand the term offer? ये थोड़े से wording different है, but simple है, सिर्फ समझने में मुश्किल हो जाती है. When one person signifies to another person his willingness to do something or to abstain from doing something with a view of obtaining the consent or assent of the other person to such act or abstinence, he is said to be making a proposal, or he is said to be making an offer. Few things to understand. पहली बात, हमने कहा signifies. जब भी कोई एक बंदा किसी किस्म का कोई सिग्नल देता है या कोई भी ऐसी बात करता है जिससे वो दूसरे बंदे को ये सिग्नल दे रहा हो कि वो कुछ करना चाहता है, डू, और या वो कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट. अब ये व्यू क्या है, बिकॉज आप इसलिए ऑफर कर रहे हो ताकि अगला बंदा जो है वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे. सो सच कैन बी नोन एज एन ऑफर और अ प्रपोजल. सो इंपॉर्टेंट थिंग्स आर signal from one person to do something or not to do something with the view of obtaining the consent of the other person to do or not to do something. Now, let's suppose if one person is just talking to the other person that he wants to sell a car. अगर सिर्फ बात कर रहा है तो वो प्रपोजल नहीं है, लेकिन अगर वो ये कह रहा है मैं तुम्हें ये गाड़ी बेचना चाहता हूं, what do you think of it? उसकी assent obtain करने के लिए then it will be known as a proposal or an offer. Otherwise वो offer या proposal नहीं होगा. So this is about the definition of the proposal. Then there are some essentials of an offer. जैसे हमने स्टडी किए थे essentials of a contract, there are essentials of an offer. So ये काफी सारे हैं, इसमें one by one देखते हैं कि क्या चीजें. For example, two persons, offer should be certain and definite. There should be a contractual intention. There must be communication, and how do we understand the communication of the offer? And then object of the consent. कंडीशनल हो सकती है कि नहीं, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, इनविटेशन टू एन ऑफर क्या होती है, एंड देन कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं. सो वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू पीपल. ऑब्वियसली इफ देयर इज एन ऑफर देयर मस्ट बी एन ऑफरी. सो द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर इज नोन एज द ऑफरर, and the person to whom you're making the offer is known as the offeree. In order for an offer to be a valid offer, there must be two people, one who's making the offer and one to whom the offer is being made. So if you're only making offer to yourself, that is not a valid offer. It must be made to some other person. Then your offer should be certain and definite. A valid offer is one which is certain and definite. Thus, no contract can come into existence if the offer is uncertain. For example, if I am saying that I want to sell some books, again, some books
does not have any certainty or any definite terms. What books? What kind of books? And if the other person is saying, I want to sell some books for some amount of money, again, both of them are not certain and not definite. Then there has to be a contractual intention. For example, people who are going into the contract or a person who's making an offer must be having the intention to create a legal contract. Now, to clarify this, let's look at these non-offers. These things are known as non-offers. For example, jokes that you make to other people. Sometimes the statements that are made in anger or terror, गुस्से में कही हुई कोई बात होती है. कई दफा आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे होते हो, मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए. कई दफा आप अपनी इंटेंशंस की स्टेटमेंट दे रहे होते हो कि आई थिंक ऐसा होना चाहिए, या मैं सोच रहा हूं कि मैं फ्यूचर में अपनी गाड़ी बेच दूंगा. और समटाइम्स यू मेक द सोशल एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल डिनर पे जाना, शादी पे अटेंड करना है, ये सारा कुछ. So these non-offers are actually saying that there is no legal intention, that there is no intention to create legal relationship. So that is why we can say that there must be an intention to create legal bonding or legal contract when you are making an offer. Then there's communication. So the offer must be communicated to the offeree. अगर आपने ऑफर खुद ही कर ली है और वो अभी तक ऑफरी को मिली नहीं है, तब तक वो ऑफर कंप्लीट नहीं होती. सो द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू whom द ऑफर इज बीइंग मेड. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को लेटर लिखा है और वो भी रास्ते में है, वो उस बंदे को नहीं मिला, तब तक ऑफर कंप्लीट नहीं होती. आजकल की टर्म्स में अगर आपने किसी को व्हाट्सएप किया है और उसको डिलीवर हो गया बट उसने पढ़ा नहीं, तो समझे कि अभी तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई. एंड ऑफर कैन बी ऑब्वियसली मेड बाय वर्ड्स स्पोकन, मतलब वर्बल हो सकती है, रिटन हो सकती है, एंड थ्रू द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसेंट, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफर कर रहे हो कि आप अगले बंदे की कंसेंट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं. अगर आप वैसे ही बात कर रहे हैं और उस बंदे से उसकी कंसेंट ऑब्टेन नहीं करना चाह रहे, दैट माइट नॉट बी अ लीगल ऑफर और अ वैलिड ऑफर. रीजन बिकॉज ऑफर तभी होगी जब आप एक्सेप्टेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे और आप दूसरे बंदे को ये पूछ रहे होगे कि क्या वो एक्सेप्ट करना चाहता ऑफर को या नहीं करना चाहता. And then you can also put some kind of conditions with it. For example, आपको एडमिशन लेटर मिलता है. एडमिशन लेटर पे लिखा होता है कि आपने 12 मार्च 2020 को पे करनी है. So, ये जो ऑफर है ये कंडीशनल ऑफर है, विच मींस इस तारीख तक और फीस पे करनी है. सो यस, यू कैन अटैच एनी कंडीशन टू द ऑफर, बट देन दूसरा बंदा जो है, जो एक्सेप्टेंस करने वाला है, उसको उस ऑफर के हिसाब से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा. ये कंडीशन ऑफर है, जब उसकी कंडीशन खत्म हो जाती है तो ऑफर लैप्स कर जाती है. लैप्स का मतलब है वो खत्म हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा है 12 मार्च तक 2020 तक आप फी पे कर दें, इफ दिस डेट is passed and you haven't paid the fee, this means that this offer is no more valid. So there can be a condition with the offer, but at the same time, it is going to lapse when there is no acceptance according to the condition. Negative confirmation, a very important concept to understand. Sometimes what we do is we try to embed some
negative confirmation wording in our proposal. For example, if I say that I want to make a sale of my car to you for 4 lakhs, but if you do not reply within 2 days, I will think that you have accepted the offer. मैंने ऑफर इस तरीके से की, ऑफर में मैंने ये बातें लिखी कि मैं तुम्हें कार बेचना चाहता हूं, और अगर तुमने 2 दिन के अंदर रिप्लाई ना किया तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी कार खरीद रहे हो 4 लाख रुपए की. नाउ ये मैंने अपनी ऑफर के अंदर ही एम्बेड कर दिए कंफर्मेशन के वर्ड्स. तो इस तरह की ऑफर एक्चुअली ऑफर नहीं होती. इट्स नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज दूसरे बंदे ने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं है, या करे या ना करे उसका अपना भी डिसीजन है, लेकिन आपने इसको बना दिया कि आप इसको मतलब एक्सेप्टेंस आपने एम्बेड कर दी उसमें कि अगर वो जवाब नहीं दे रहा दैट मींस एक्सेप्टेड है. फॉर एग्जांपल, an offer cannot be in the form of negative confirmation, that is, if it is not accepted within a specific time, then it will be presumed to have been accepted. You can't do this. Shouldn't do it because it's not going to be a valid offer. Another important concept to understand is the invitation to an offer. To understand this, we'll go to this example. For example, there are goods displayed in a departmental store for sale and self-service system is there. One customer selected the item. Now here, the display of the goods is the invitation to an offer and not an offer. And selection by the customer is going to be an offer to buy. Now, simple मतलब क्या है इसका? यूजुअली हम जब जाते हैं रिटेल स्टोर पे और वहां डिस्प्ले पे कोई चीज लगी हुई है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक बुक है, हमने वो बुक पिक की और हम काउंटर पे आ गए. काउंटर वाले को आके हमने कहा कि बुक हम खरीदना चाह रहे हैं. यूजुअली हम ये समझते हैं कि बुक उन्होंने ऑफर कर दी थी जो डिस्प्ले पे लगाई थी, और हमने उसको जो सिलेक्ट किया है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया. और फॉर एग्जांपल आप बुक लेके आते हो काउंटर पे, बुक वाला शॉपकीपर कहता है ये बिक गई हुई है, इट इज ऑलरेडी सोल्ड, मैं आपको ये नहीं दे सकता कॉपी बुक की. आप कहते हो मैं इसको सू कर देता हूँ, इसने ऑफर की थी, मैंने एक्सेप्टेंस कर ली है, अब ये बात नहीं मान रहा. एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज दैट डिस्प्ले was not an offer, but it was an invitation to offer. Invitation to make an offer. उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप ऑफर करें हमें. सो कस्टमर ऑफर करता है टू द रिटेलर, मैं ये चीज खरीदना चाह रहा हूं. अगर वो कहता है कि ठीक है मैं आपको सेल करता हूं, then there's going to be a contract. इस तरीके से अगर आप इनविटेशन टू एन ऑफर देखो, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द इनविटेशन टू एन ऑफर. द इंटेंशन ऑफ इनविटेशन एन ऑफर इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू द ट्रांजैक्शन. सो जो उसने डिस्प्ले पे कुछ चीजें लगाई हैं या एडवर्टाइजमेंट है या कुछ है, दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर, मेंशनिंग वो ट्रांजैक्शन के लिए तैयार हैं, बट जब जाएगा कस्टमर उनके पास तो कस्टमर इज गोइंग टू मेक एन ऑफर एंड देन दे आर गोइंग टू मेक एन एक्सेप्टेंस. सो इन अदर वर्ड्स, एन इनविटेशन टू एन ऑफर मींस एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू इनवाइट अदर्स विद द व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, बट इट इज नॉट एन ऑफर. सो देन communication of a special condition. When there are special terms and conditions in the offer, they must be specifically communicated to the other party. अगर उसमें कोई ऐसी conditions, terms and conditions हैं, तो वो आपको communicate करनी चाहिए, otherwise वो offer complete नहीं होती. बहुत दफा हम किसी ऑफर को देखते हैं या इनविटेशन टू एन ऑफर को देखते हैं तो बहुत बहुत बड़ा सारा बिलबोर्ड होता है और साथ छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. वो डिसेप्टिव मार्केटिंग होती है
बट स्टिल उनको लिखना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज उसमें टैक्सेस एंड हिडन कॉस्ट्स, वो सारी चीजें जो हैं वो मेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो कह देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. सो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको पढ़नी है तो यू कैन गो टू देयर वेबसाइट समथिंग. बट आइडिया इज कि अगर कोई कम्युनिकेशन, सॉरी, कोई स्पेशल ऑफर के साथ अगर किसी ऑफर के साथ स्पेशल कंडीशन है तो फिर आपको वो कम्युनिकेट करना लाजमी है, अदरवाइज वो ऑफर वैलिड नहीं होगी. दिस इज ऑल अबाउट आवर एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर.